Hello, myself Priyanka, and today we are going to start December current affairs. In this session, we will be doing from 1st December till 5th of December. So let's start. First, World AIDS Day. We celebrated on 1st of December. We celebrated it to create awareness against the spread of HIV infection. The theme of World AIDS Day 2021 is End Inequalities, End AIDS, End Pandemic. Due to COVID-19, the healthcare services for the HIV/AIDS got declined. Next, Char Dham Devasthanam Management Act. Recently, Uttarakhand government withdrew from this act due to protest from the priest and other stakeholders of Vishwa Hindu Parishad. For this, we have to look into the background of this act. That is, in 2019, Uttarakhand Char Dham Shrine Management Bill was there. In that, Char Dham of Badrinath, Kedarnath, Gangotri and Yamunotri and 49 other temples was under the preview of Shrine Board. The board got the member of the boards was Chief Minister was the chairman, Ministry of Religious Affairs was the vice chairman, Senior IS officer was Chief Executive Officer, and 2 MLA from Yamunotri and Gangotri were the member of the board. What was the work of the board or the responsibility? These are to manage the temple, to frame the policy, to sanction the expenditure, budget formation. Board has also the power to give direction for the custody of the temple jewelry and properties. Next, Judges Bill introduced in Lok Sabha. Recently, High Court and the Supreme Court Judges Salary and the Conditions of Services Amendment Bill 2021 got introduced in Lok Sabha. According to the bill, retired judges will be entitled to have an additional quantum of pension at a certain age. There is a time frame in this bill, that is, the increase in the pension of the retired judges will be implemented on the first day of the month in which they complete the age specified. There is also a scale according to which 5 baskets are there, which are with the minimum age of 80, 85, 90, 95 and 100. The additional quantum will increase from 20% to 100% of the pension. Next, pilot project to revive Namda craft in Kashmir. This project comes under the Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana 3.0. This is to upskill the artisan weavers of the Kashmir under the recognition of prior learning. इस क्राफ्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू बूस्ट एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशनल नामदा क्राफ्ट ऑफ कश्मीर एंड अपस्किल करना लोकल वीवर्स को. नामदा क्राफ्ट क्या है? इट इज़ अ क्राफ्ट is a rug made up of sheep wool through filling techniques instead of normal weaving process. ये पूरा प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है. इट इज़ डिज़ाइन फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करिकुलम टू प्रिजर्व दिस इंडेंजर्ड क्राफ्ट. नेक्स्ट, सर्व पावर स्कीम. ये पूरा स्कीम आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर. सर्व का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. पावर का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च.
आपको इसके फुल फॉर्म से ही पता चल गया होगा. इट इज़ फॉर द वुमेन साइंटिस्ट. इट इज़ टू अपलिफ्ट and give more importance to the women scientists in this sector. Women researchers in the age of 35 till 55 can come in this scheme, and all the grants for this scheme will be regulated by SERB core research grants guidelines. Next, Information Management and Analysis Center of Indian Navy. It is set to become National Maritime Domain Awareness Center. It is set up after 26/11 मुंबई अटैक के बाद. इसको अप्रूवल मिला है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से इन 2012. ये ऑपरेशनल में आया है 2014 में और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन गुरुग्राम. इट इज़ अ मल्टी एजेंसी सेंटर. मेन फंक्शन क्या है इस एजेंसी का? इट इज़ टू कनेक्टिंग ऑल द ऑपरेशनल सेंटर and lower stage of the Indian Navy and Coastal Guard located along the huge coastal line and island territories. It is the main center of national command, control, communication and intelligence system. इसका एक और काम है to track the vessel on the high sea and get data from the coastal radar. Next, National Pollution Control Day. We celebrate this day on 2nd of December. It is to observe in the memory of the people who we lost in Bhopal gas tragedy in 1984 in Madhya Pradesh. The theme of National Pollution Control Day 2021 is to create awareness about the importance of the pollution and to educate people to how to prevent pollution. Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020. The bill is aimed to provide for the regulation of ART, that is Assisted Reproductive Technology. अब ये ART है क्या? It is used to treat infertility. कैसे? In ART, the eggs are removed from woman's body, mixed with the sperm to form embryo. For this all technique, whichever the bank, इसमें से ये पूरी टेक्निक जो भी ट्रीटमेंट जो भी बैंक और क्लिनिक्स प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट चाहती है उन बैंक्स और क्लिनिक को एक रेगुलेटरी फॉर्म में लाने के लिए. इसीलिए the bill wants them to get registered under National Registry of the Bank and Clinic of India. उसके लिए भी कैटेगराइजेशन रखा गया है, एक स्टैंडर्ड रखा गया है टू फुलफिल बाय दिस बैंक एंड क्लिनिक. दैट इज टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, स्पेशलाइज मैन पावर प्रोवाइड करना, डायग्नोसिस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. जो भी क्लिनिक और बैंक इस सब चीज़ों को स्टैंडर्ड को फुलफिल करेगी, दैट क्लिनिक विल बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्री एंड द रजिस्ट्री विल बी वैलिड फॉर द 5 years ओनली. इसके अंदर कुछ और कंडीशंस भी आती है. दैट इज द फीमेल एग्स कैन बी फ्रीज्ड, कैन बी obtained from the female only for once in the life from the age of 23 till 35, and sperm can be obtained for the male from the age between 21 to 55. इसमें और भी बिल में प्रोहिबिशंस हैं जैसे सेक्स सिलेक्शन एंड द सेक्स डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021. It is released by Economic Intelligence Unit. According to the report, Tel Aviv of Israel is the most expensive city of the world, followed by Paris. Then in third position, Singapore,
इंडिया की कोई भी सिटीज़ टॉप 20 में रैंक में क्रॉस नहीं कर पाई है, बट द टोक्यो ऑफ जापान, संघाई ऑफ चाइना टॉप्ड इन फर्स्ट 20 रैंक्स. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ट्रैक करता है टोटल 170 सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कंपेयर इट more than 200 everyday products and services. इसका benchmark क्या है? The benchmark for this is the price against the price of New York, and the city with currency that are stronger than the US dollar appears the highest in the ranking. Next, Rural Development Ministry and Flipkart signed a MOU to empower local businesses. ये पूरा प्रोग्राम आता है दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ द रूरल कम्युनिटीज़ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंडर आता है. इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम. मेन एम है इस पूरे MOU का टू स्किल्ड एंड अनडिजर्व communities of weaver and craftsmen and to provide a market access using Flipkart marketplace. Next, India joined G20 Trioka for the first time. G20 Trioka है क्या? It is a group of 3 countries in G20. जो एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे कि G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बट थ्रू दिस G20 ट्रियोका द प्रेसिडेंसी लाइज इन दैट ओनली कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, the chair established secretariat temporarily, and the secretariat organized a meeting and coordination the working of the group. अब ये ट्रियोका बना क्या था, क्यों था? टू हेल्प द सेक्रेटेरिएट सो दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूटी इन द वर्क ऑफ G20. अब इसमें मेन चीज़ें जान लेते हैं. इन 2020 इटली होस्टेड G20 and in 2021 the presidency lies with Indonesia, and in 2022 India will be hosting G20. For this year presidency lies with Indonesia and the theme is recover together, recover stronger. And one more important thing, that India will take for the first time presidency of G20 Trioka in 2022. Next, Anju Bobby George wins Woman of the Year award from World Athletes. She won the award for grooming young girls to take up sports. She is gold medalist in 2005 IAAF World Athlete Finals. She is the first athlete to win bronze medal in long jump at World Champions in Athletes held in 2013 in Paris. Barbados has officially removed British crown as its head of the state and become the world's newest republic nearly 400 years after the country became the British colony. However,
It will continue to be the Commonwealth nation. Barbados is a small island country in Southeast Caribbean Sea और इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन. नेक्स्ट, पराग अग्रवाल. He is appointed as a new Chief Executive Officer of Twitter. Next, International Day of Person with Disabilities and on 3rd of December. The International Day of Person with Disabilities, we celebrate it on 3rd of December by UN and several other organizations. This year the theme was the leadership and the participation of the person with disabilities toward inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world. हर डे का जब भी हम मेंशन करते हैं उसका थीम और विच डे इट इज सेलिब्रेटेड, वी ऑलवेज हैव टू कंसिडर इट. नेक्स्ट, निज़ामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट गेट 2 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड. क्या क्या है? पहला, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अवार्ड मिला है. सेकेंड अवार्ड मिला है अवार्ड फॉर एक्सेलेंस. अब ये क्यों मिला है? निज़ामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट इज़ अ अर्बन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट. ये 7th सेंचुरी ओल्ड सेटलमेंट है निज़ामुद्दीन बस्ती का. इसके अंडर 3 मेजर साइट्स आते हैं, सुंदर नर्सरी, निज़ामुद्दीन बस्ती एंड हुमायूं टॉम. ये इस पूरे प्रोजेक्ट के अंडर 20 और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जो 14th सेंचुरी के अराउंड बिल्डअप किया गया था, जिसको रिस्टोर किया गया है अभी. और लेट्स नो समथिंग अबाउट निज़ामुद्दीन ऑल्सो. Nizamuddin was Sufi saint, was born in 1238 and he was also known as Hazrat Nizamuddin and Mehboob-e-Ilahi, meaning beloved of God. He was Sufi saint of Chishti order. Next, Gita Gopinath, IMF first Deputy Managing Director. She is an Indian American and first Deputy Managing Director of International Monetary Fund. In 2018, she was appointed as Chief Economist of IMF. She named the world recession of 2020 due to COVID-19 as Great Lockdown. Next, PM Modi inaugurated Delhi-Dehradun corridor recently and several other projects. The corridor will reduce the distance between the two cities from 248 kilometers to 180 kilometers. Other projects are 120 megawatt Vyasti hydroelectric project. Next is 38 kilometer long all-weather Char Dham road project between Srikota and Devprayag. 33 kilometer stretch between Kodalia and Brahmapuri. State Perfume and Aroma Lab in Dehradun. This center will focus on developing high-yield advanced varieties of aromatic plants. So, thank you so much for this session. We will be meeting in next session. Thank you.